Lena, any more. Very good. Uh, Then protist, similar okay, type. hmm, just a minute. Okay. For 2 minutes, you people just have revision. What are the importance of advantages of reproduction? Just for 2 minutes. I'm getting back. Reproduction is important for the formation of the new species, and the definition of reproduction is that from गगन माइक parents कौन है new तेरा? species. हाँ तो मैम ने हमको रिवाइज करने को ही बोला है. माइक तो ऑफ इतनी जोर करके से मत पढ़ना. कर। अरे हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा मैम ने बोला है. देख हमेशा स्टार्टिंग में करते हैं ना वैसे. अच्छा ठीक है, शॉर्ट में अभी रिवीजन दे दो. चलो, जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. एनी वन ऑफ यू, क्विक आंसर. मैम कहना है गगनदीप. एनी वन. Yes ma'am, reproduction is the formation of the species or the offspring from the parents. From the parents. Okay. Then second question is, what are the mode of reproduction? There are Is two modes sexual of reproduction and sexual reproduction. No, these are the types of reproduction. I asked you what are the modes of reproduction. Modes. Reproduction takes place from mitosis and meiosis. Mitosis. No, this is the division. Mitosis and meiosis, what you are talking about, this is the division, cell division, the way of or mechanism of cell division. Okay, just a minute. From mitosis, I remember, got the point. Yesterday you had a doubt like what are the number of phases involved in prophase, right? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Yes. So as it was not given in the textbook, I have not taken in detail. But today I just highlight the name of phases. In prophase, total 5 phases are there. So the first phase is leptotene. If you want to note down in notebook, you can mention anywhere. Are you carrying notebook and pen with you? Yes. Yes, miss. Okay, so you should keep it ready. I will not revise the overall process, but in short only, like what are the names or stages, what takes place during prophase. So first one is leptotene. It is very short phase. And if you remember what happens during prophase, at the starting of prophase? Chromosome condenses and becomes thick. Okay, they become thick, short and visible. So actually that stage is called as leptotene. Clear? Okay, chromosomes condense and become short and thick. That phase is called as leptotene. Later on, what happens? The second phase is zygotene. Zygotene. Yeah, in zygotene, we can see the formation of homologous chromosomes. Means now chromosomes becomes visible, and there we can see the formation of sister chromatine. Can you remember the structure? Yes, miss. So Yes, miss. See, all the introduction what we have studied in prophase, only step by step, they are actually named like leptotene, zygotene, pacatine, pacitine, then diplotene, and last one is dikinesis. So first step, leptotene, chromosomes becomes condensed. Second step, zygotene, here all the homologous chromosome begins to occur. Then next one is pacitine, where we can see two sister chromatids separate from each other. Okay, sister chromatids get separated from each other. Finally, the next one is diplotene. In diplotene, two homologous chromosomes, they start to migrate opposite to each other. Okay, in diplotene, two homologous chromosomes move opposite to each other. And finally, this is the last stage of prophase, which is called dikinesis. Dikinesis. Yeah. In this case, the termination of whatever chromosomes, condensation of chromosome takes place. Now, finally, they are terminated. Okay. Now, finally terminated means now they will move at the center, and that phase we will call it as, they will move towards the equatorial plane of the center. And that phase we call it as metaphase. Remember? Excuse me, miss. Yeah. Miss, in metaphase of mitosis, you told that the chromosome moves to the pole, but chromosome did not move. No, the centromere moves to the pole, and they then find the spindle fiber, and afterwards
they connected to Chromosomes. each other, na? Spindle fiber actually connect to the that protein is there. Karyokinesis protein is there. That concept not given in your syllabus. Okay, spindle fiber get attached to the karyotin protein of the chromosome, and then along the spindle fiber they comes at the equatorial plane. Centromere move Okay, opposite to miss. the pole. Centromere moves opposite to the pole. But in metasphere, you just look at metakinesis phase. Chromosomes comes at the equatorial plane. Okay, and that spindle fiber get attached to the that protein part of the chromosome. That protein fiber attached to the centromere of each chromosome. So that fiber is that spindle fiber we call it as they are attached to the centromere of the centromere stage. Now again we have to look at the diagram if we go in detail. So as per your syllabus, whatever was only the names and the pictorial presentation was given. So I explained accordingly. So these are like in detail the number of phases whatever we statement wise we studied, but that all the statement or the Excuse me, steps. miss. Yes. Miss, can you repeat in the short asexual reproduction of unicellular organism? Because of Yeah, we are. network issue, I cannot hear you. All the 3 points in short. Yes, we are having today the revision. Anyways, I just told her about the mitosis and meiosis. So these are the few more stages what we have not taken in previous lecture, but I had given you the idea. Okay. And one more point is here, if somebody asks you like what are the stages of cell division. So like already I told you like meiosis and mitosis, these are the two stages. But at the same time, if in detail they want to know, your answer is the initial phase is called interphase. The cell cycle, it started from interphase, which is long, not having any observational changes, which is followed by prophase. Then after means it is followed by mitosis. Then mitosis having the number of phases, prophase. फिर prophase में भी total 5 phases are there. After prophase, it doesn't directly comes the metaphase because metaphase के पहले भी एक phase रहती है, that is called pre-metaphase. ठीक है, फिर metaphase, then anaphase, then telophase, and finally cytoplasm is divided, which is called followed by the cytokinesis. ठीक है. So that Yes. was about the prophase and detail about the mitosis and meiosis. Now I will repeat here as you said, like what is the okay. First of all, reproduction means what? The process of it is the process of production of formation New of new From organism. parent Done in the by the parents. organism. Yeah. Now I just tell you like reproduction process of formation of new organism from the parent. Okay, from parent or by the organism of same species. Now in reproduction, there are two modes of reproduction. First one is vegetative mode. Second one is reproductive mode. Now what is vegetative and reproductive? In vegetative mode, it occurs by root Root It stems occurs stems. by root Yes. and Root stems. buds. roots, stems and leaves. And reproductive mode, it takes place by Gametes. fruits and Fruits flowers. and seeds. fruits and Flowers. flowers. Okay, fruits and flowers. Now, in asexual reproduction in plants, okay, it takes place by many ways. The processes are known as budding, fragmentation, vegetative propagation, and spore formation. Now, how does the detail about we are going to study here? But certain important characteristic of asexual reproduction. Yesterday also we had discussion like it involves the production of new species without involvement of And another gametes. Any other with gametes. without an involvement of gametes or seeds. Okay, this was the first point. Then it does not involve the fusion of Male and two female gametes. gametes. Yes, and it occurs by what kind of division? Mitosis. Mitosis. This Mitosis. is this is a very fast process, or we can say short process. Okay, process of reproduction. In this case, organisms multiply and grow rapidly. But the point is that here we can see the absence of genetic combination. Okay, the cell means the offsprings of the same parents are formed. Okay, there is no mixing of genes from different parents, which is called genetic combination. So all the offsprings obtained by this method are having genetically same. All of them are similar in genetically same. Then the next one is that these are the characteristic of asexual.
Opposite to that are the characteristic of sexual reproduction. So yesterday we have seen in unicellular organism means what? Which are made up of single cell. Examples are amoeba, bacteria, euglena, or basically we can say here protist. Protist means those organisms which are capable to show the photosynthesis like the plant, but they also show the features of animals, like they can have locomotion and like that. Okay. So these organisms, asexual reproduction takes place. Here simple point is that it takes place by 3 different ways. The first one is binary fission, then multiple fission and budding. So binary fission means you can see in the diagram a single cell. Okay, DNA replication means copy of DNA material takes place. Then the single cell get divided into how many cells? Two different cells. Two diploid cells. Diploid cells means here number of chromosomes are conserved as it is. 23. Chromosomes are not divided. नहीं, not 23 नहीं, 46 से तो हर सेल में 46 ही रहेंगे. Chromosomes numbers are not reduced because it takes place by mitotic division ना. It occurs by mitosis. अगर mitosis होता है तो 46 नंबर है तो हर सेल में 46 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे. अगर मायोसिस होता है तो फिर वो हाफ होते हैं. समझ में आ रहा है? लेकिन मायोसिस के बाद जब एक फीमेल गैमेट गेट्स यूज्ड विद द मेल गैमेट, तो दैट टाइम फिर से क्रोमोसोम नंबर्स आर रिस्टोर्ड. मतलब द रिजल्ट ऑफ मायोसिस इज व्हाट? द सेम क्रोमोसोम नंबर्स आर रिस्टोर्ड, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस नंबर्स आर रिड्यूस्ड. So this is binary. The single cell is divided into 2 by mitosis division, that is called binary. It occurs in amoeba, euglena and bacteria. Yes. Miss, you told that the single chromosome that diploids, they contain the 46 each, no? Each cell. Then females and men gamete will fusion together, then 46. नहीं, ये इसमें नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि माइटोसिस में क्या होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, अभी जैसे कि ये 2 डिप्लॉइड सेल है, हाँ, इनका जब आगे डिवीजन होगा तो ये 2 सेल फॉर्म करेंगे, ये क्या करेंगे और 2 सेल फॉर्म करेंगे. दोनों में भी जितना 46 है तो 46 ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे. समझ में आ रहा है? जब आप माइटोसिस देखते हो डायरेक्टली, हाँ, सेल का डिवीजन हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर्स कंजर्व्ड रहते हैं. ये आप कौन से जिसमें देखते हो? माइटोसिस में. मतलब जो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. ठीक है. लेकिन अगर आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हो तो ये क्रोमोसोम नंबर में क्या होता है? देखो, सपोज एक सेल है, हाँ, ये सेल में सपोज मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए. अब इसका मायोसिस हो रहा है. मायोसिस मतलब अब क्या होगा? इसमें 23 और इसमें 23 डिवीजन हो गया. ठीक है. अब ये 23 वाला जो सेल है इसका फ्यूजन होगा किसी और के साथ. किसी और के साथ मतलब सपोज ये मेल पेरेंट है तो नाउ इट विल बी फीमेल पेरेंट एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अगर जाइगोट फॉर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिस्टोर्ड, क्योंकि एक पेरेंट का 23 और दूसरे पेरेंट का 23. मायोसिस में जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, क्रॉस कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम इसको, क्रॉसिंग बोलते हैं, क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट्स, जेनेटिक मटेरियल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, miss. Yes, ma'am. ठीक है. माइटोसिस में कोई इश्यू ही नहीं है. माइटोसिस में जब किसी भी टाइप में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इट इज फॉलोड बाय माइटोसिस. और माइटोसिस में सिर्फ पेरेंट सेल इट गेट कन्वर्टेड इनटू और डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई. द पॉइंट इज दैट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में पहले थे, as it is chromosomes are transferred to the daughter cell, they are not reduced. ठीक है. लेकिन रिडक्शन ऑकर होता है मायोसिस में. तो इसीलिए तो आपको डिफरेंस बताया था ना कि जो मायोसिस है वो जर्म सेल्स में होते हैं और जो माइटोसिस है इट ऑकर्स इन बॉडी सेल ओनली. ठीक है. Yes. Then binary fission, we have seen simple binary fission is possible, longitudinal binary fission is possible, and transverse binary fission is possible. So these are 3 different ways. Then in multiple fission we have seen what happened in multiple fission. In multiple fission, can you remember? Yes, yes. In yeast, an area where the food is less, so it gets folded from that areas, and it covers the plasma membranes, and
Then slowly nuclear division and cytoplasm division takes place and cysts are formed. Actually that spudopodia is the organ, or we can say the area wherever we can find the absence or lack of food is there. So that area get that finger-like projection get folded, okay, around the protoplasm, around what cytoplasm. So when it get surrounded, it forms the cyst. When it forms cyst, so what happens in a favorable condition? That cyst, in cyst, two kind of division takes place. One of them is nuclear division called as karyokinesis, and then after nuclear division there is the cytokinesis. इसके अंदर ये डिवीजन होता है, और जब ये cyst favorable condition में आती है, it get broken down like this, and then number of मतलब जो amoeba are there, they are released. So that kind of fission is called as multiple fission. ठीक है, large number of amoeba are produced. Then budding we have seen. This is the again type of asexual reproduction. इसमें क्या होता है कि जो आउटग्रोथ पहले डेवलप होती है ऑन द सरफेस ऑफ मतलब ऑफ द सेल, ये आउटग्रोथ आगे बल्ग आउट इन अ न्यू बर्ड, और धीरे धीरे क्या होते है, इट गेट सेपरेट आउट एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली. मतलब बर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड कैन जनरेट द न्यू लाइफ. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बडिंग. Now, our today's topic of discussion is asexual reproduction in multicellular organism. Now, in multicellular organism, as I said, these kind of organisms are made up of millions of cells. For example, humans, fruits. Okay. So now, if they are made up of millions or billions of cells, so how does the reproduction takes place in this kind of organism? So in this kind, there are different types of reproduction. So total ways are, first one is again binary fission, budding, fragmentation, vegetative propagation, and sporogenesis. What are the asexual reproduction in multicellular organism? Binary fission, budding, fragmentation, vegetative propagation, sporogenesis. And sporogenesis. Now the example is shown here of the fragmentation. Spirogyra, how does fragmentation takes place? So who would like to read this slide? Ma'am, can I read Preeti? Ma'am, can I Gagandeep? Ma'am, can I? Preeti, I heard first. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Fragmentation is another mode of asexual reproduction exhibited by organisms such as Spirogyra, Planaria, etc. The parent body divides into several fragments, and each fragment develops into new organism. In this method, the body of a simple multicellular organism breaks up into a smaller pieces. In this what happened, the fragmentation, the example of Spirogyra is given. The Spirogyra, in this method what happens, this multicellular organism breaks into the smaller pieces. Just look at the diagram. And these smaller pieces further develop into the individual organism. Okay, so fragmentation means what? The multicellular organisms broken into the smaller pieces. And that smaller pieces undergo maturation, what we can say, further developed as a new organism. So the process is called fragmentation. In multicellular organism, fragmentation takes place in Spirogyra and Planaria. Now, the second one is regeneration. For understanding the example of regeneration, one of the common example we can take, wall lizard, आपको पता है? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, miss. Okay, so wall lizard क्या करती है कि when it comes to dangerous situation, so what it happens, it broke down, it breaks its tail. You know that condition. It actually lost its tail. Okay, in the dangerous situation. But what we can observe in the that wall lizard or multicellular organism is capable to regenerate that. Okay, whatever the lost organ or that body part is there, it is capable to regenerate that. So why it is capable to regenerate? Because they have the asexual reproduction. They can have the mode of asexual reproduction, which comes under the category of regeneration. Regeneration means what? It is the power of growing a new organism from the lost body part. What is regeneration? The power of growing a new organism from the lost body part. Organism with lost body part. Growing means this is the power or potential. Such multicellular organism like lizard, okay, they have the capacity like
whatever lost part is there, they can grow. The new tail, they can have they can grow the new tail also. And this is because they have the specialized cell present in that organism. That specialized cell means they continuously undergo cell division and they form a new individual. Okay, so Hydra is also there and Planaria also there. Means along with respect to that, or in addition to that, Hydra and Planaria, they also undergo regeneration. Now, for example, the example of Planaria is shown. You can see if Planaria is broken into two. So what happens? You can see it can, the broken part, that broken organism, it can also start its new life as an individual. So the process is called regeneration. Is it clear? Yes, yes. Yes, ma'am. Okay. Now the next one is budding. So simply budding means what? From the birds. Okay, the name only itself suggests us what is meant by budding. We are talking here about the asexual reproduction. That is, new organisms are developed. So budding is what? It is the process of development of a new organism from the birds only. So example is that Hydra is one organism that reproduces by budding process. Means initially what happens? It forms number of birds. You can see in the diagram how birds are formed. Ground bottom पे देखो diagram में. Hydra is the example how birds are formed. This bird further grow. Okay, grow होके क्या करते? It form number of tentacles as shown in the diagram. Can you see? Yes, Yes, miss. ma'am. Yes, miss. ठीक है, मतलब और बाद में क्या होता है कि when this bird get enough amount of nutrition and shelter from the parent organism, finally it detach itself. It get detach itself means what? वो खुद ही उसको ब्रेक करके then form the individual organism. ओके, जब वो फुल्ली ग्रोन होता है तो देन वो अपने आप को डिटैच करता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एंड देन फॉर्म्स अ न्यू लाइफ एंड दैट इज कॉल्ड एज बडिंग. आई रिपीट द पॉइंट. Budding means what? This is the process of production of individual one from the through the birds. So first of all, from parent body, there is the development of certain birds. These birds are like derive the essential nutrition and shelter from the parent plant, parent organism. When they get fully grown up, they detach themselves from the parent one and then start to live independently. And that process is called as asexual reproduction, but by budding. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, miss. I will ask you now after 2 more slides. Now, Ma'am, the fourth, yeah, can you repeat the budding point? हाँ, देखो बडिंग में मतलब एक एग्जांपल है हाइड्रा. आप देख रहे हो क्या डायग्राम में? दिस इज वन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड हाइड्रा. ठीक है, अब स्लोली स्लोली ये इसको क्या करना है, अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स और न्यू इंडिविजुअल इट हैज टू फॉर्म. तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपने पेरेंट बॉडी पे सर्टन बर्ड्स आर डेवलप, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ ना, जस्ट फोकस ऑन दैट. ठीक है, पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा बर्ड वो डेवलप करता है. ठीक है, डेवलप करने के बाद क्या होता है, थ्रू द बर्ड ओनली इट गेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. फिर धीरे धीरे उस पे क्या डेवलप होते हैं, टेंटाकल्स. दिख रहा है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब पहले पेरेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप द बर्ड, the birds get all essential nutrients and favorable condition from parent, then develop tentacles. tentacle development मतलब अभी ये हाइड्रा का फुल्ली डेवलपमेंट हो गया है. जब उसका पूरा डेवलपमेंट होता है या इट ग्रोन टू द फुल लेवल, तो क्या होता है, वो अपने आप को इससे ब्रेक कर लेता है पेरेंट, और ब्रेक करने के बाद यू कैन सी 2 more individuals are formed. Is it clear? Yes, miss. Yes, Yes, miss. ma'am. Okay, so this is the next this is the process budding. Now after budding we have the next one. What is that? Vegetative propagation. Vegetation. Vegetative propagation. This is another method of asexual reproduction. Now vegetative propagation means what? The new plant should be generated from 3 modes. Can you tell me what are they? Steam, roots, Steam. and Leaves. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी और जैसे हमने प्रीवियसली देखा है फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. ठीक है, सो द सेम प्रोसेस इज फॉलोड Miss, इन and वेजिटेटिव also प्रोपोगेशन. birds. हाँ, बर्डिंग आल्सो, या राइट. तो व्हाट इज द पॉइंट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन?
एक्चुअली अगर इफ यू टॉक अबाउट द रूट्स, तो इसमें ना जो रूट्स रहते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज ट्यूबर्स. आई रिपीट द पॉइंट, द ट्यूबरस काइंड ऑफ रूट्स, the plant which are having the tuberous kind of roots, they undergo vegetative propagation. अब tuberous kind of roots means what? Those are capable to store or having the capacity of storage of water and essential nutrients in them. अभी देखो नॉर्मल प्लांट के कंपेयर में इस प्लांट में आपको इनके रूट्स जो दिखेंगे ना, they will be full very heavy and of higher size. For example, you can see here, what is this? Sweet potato. Okay, so इनके जो roots है, what are the condition of these roots? They are having swollen roots या उसको बोलते हैं tuber. These swollen roots are capable to store nutrients and essential contents for the plant. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि कैरोट भी बोल सकते, ट्यूबरस में ही आता है. तो न्यू प्लांट विल ग्रो आउट ऑफ द स्वॉलन एंड मॉडिफाइड जो रूट्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्यूबर्स. इसमें छोटे छोटे बर्ड्स भी डेवलप होते हैं एट द बेस ऑफ स्टेम एंड दे आल्सो ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. पोटैटोस में भी क्या होता है? पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या होता है कि इसमें एक तो बडिंग के थ्रू, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू या रीजनरेशन के थ्रू. ठीक है, अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन 3 पार्ट में होता है, एक रूट्स में, एक स्टेम में, एक लीफ. ठीक है, जब आप रूट्स में देखते हो तो इसमें जो रूट्स रहते हैं वो स्पेशलाइज्ड रूट्स रहते हैं. स्पेशलाइज्ड रूट्स मतलब जिनको हम ट्यूबरस रूट्स बोलते हैं. दैट रूट्स आर कैपेबल टू स्टोरेज न्यूट्रिएंट. अपने बॉडी में वो पूरा न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. और इनके बेस, जो बेस ऑफ द स्टेम रहता है, वहां पे आप डायग्राम में देखो ना, न्यू स्टेम्स आर डेवलप्ड. बेस ऑफ द स्टेम में नए what we can say, at the base of stem certain birds are developed and that actually grow into the new plant. Okay, clear. उसके बाद है आफ्टर दिस पोटैटो का एक वन मोर एग्जांपल इज देयर. पोटैटो में भी क्या होता है? ट्यूबरस काइंड ऑफ स्टेम, सो व्हाट वी कैन से. और इसमें भी क्या होता है कि एक छोटा सा उसका जो ट्यूबर्स है या स्टेम्स है, उसमें छोटे छोटे बर्ड्स दिखते हैं और वी ऑल्सो कॉल इट एज आईज और नोड्स. ठीक है, तो इसमें न्यू ग्रोथ, जस्ट लुक एट द डायग्राम, जो बर्ड्स या आईज या ग्रोथ हम बोलते हैं ना, इसमें से न्यू प्लांट इज डेवलप. Yes, miss. समझा. आफ्टर दिस हमारा फोकस यही है कि कहाँ कहाँ से न्यू प्लांट डेवलप होते हैं बाय हैविंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट. ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि रूट्स के ऊपर जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो छोटे से बर्ड्स डेवलप होते हैं, बर्ड्स फर्दर डेवलप और ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. सिमिलरली प्लांट्स. Miss, you told that the potatoes are grown from the reproduction, na? So why do the taste of the पोटैटोज टेस्ट आर डिफरेंट मीन्स. अच्छा, कोई अच्छा रहता है, कोई खराब रहता है ना, हाँ, बोलते हैं. तो वो पेरेंट पे डिपेंड है ना, सिंगल पेरेंट. अभी देखो पोटैटो के भी तो कितने सारे स्पेसीज रह सकते हैं ना. सिंगल पेरेंट है लेकिन स्पेसीज तो बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी कैसे बोलूं, स्पेसीज बहुत सारे हो सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, देखो तो पोटैटो जहाँ पे ग्रोथ होता है, सपोज महाराष्ट्र में ग्रोथ हो रहा है या मुंबई में ग्रोथ हो रहा है, यहाँ की जो सॉइल का नेचर है, फर्टिलिटी है, यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स है, तो अकॉर्डिंगली द क्वालिटी एंड यील्ड विल बी देयर. Yes, miss. ठीक है, मतलब स्पेसीज तो एक ही रहेगी. अंडर पोटैटो सिंगल स्पेसीज विल बी देयर बट अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल लाइक दिस. ठीक है, इसलिए देखो जो वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी प्लांट्स और जो ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, उसमें हमेशा सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व है, बाकी कोई है ही नहीं उसमें इन्वॉल्व. लेकिन जो बाकी के जो आपको डिफरेंट कैरेक्टर जेनेटिकली वो सेम रहते हैं, दैट यू मेक श्योर अबाउट. उनमें एक ही जेनेटिक जीन्स प्रेजेंट है. सारे पोटैटो दुनिया भर में कहीं पे भी जाओ, सिर्फ जो क्वांटिटी वाइज जो कैरेक्टर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल एडोप्टेशन. तो उसके बाद है प्लांट्स, ब्रायोफाइलम. तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि उनके जो लीफ रहते हैं, दे सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी शूट्स. यू कैन सी इन द डायग्राम. ठीक है, फिर ये शूट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं.
ग्रो होने के बाद अपने आप को ओरिजिनल लीफ से ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद दे फॉल ऑन द ground and then they take up the root, and that process is also the example of budding in case of vegetative propagation. मतलब कुछ ऐसे स्पेशलाइज प्लांट है, उनके लीव्स पे क्या होता है, they can develop or they can support the development of tiny shoots. फिर ये शूट बर्ड्स क्या होते हैं, धीरे धीरे थोड़े से ग्रो होते हैं लीव्स पे, आफ्टर दैट दे देमसेल्व्स ब्रेक डाउन, मतलब डिटैच होते हैं, और डिटैच होके दे फॉल टू द ग्राउंड एंड देन डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम. Guys, are you getting this point? Yes, Yes, miss. उसके बाद है लास्ट पॉइंट है जिस रिप्रोडक्शन में, स्पोर फॉर्मेशन. Who would like to read? Yes, Sahil. मैम कहना है. Yes. When Spirogina bursts, minute single cell, thin or thick fall structure called spores are obtained. They are dispersive, that is, they are secreted by rain, wind or insects. Under suitable condition, they develop into a new plant. Okay, that is called sporogenium. Okay, sporogium. तो बेसिकली स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियम या बहुत सारे स्पोरेंजिया. तो ये बर्स्ट होते हैं, उसमें से जो सिंगल सेल्स रहते हैं, हाँ, जो सिंगल सेल थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड एज स्पोर्स. फिर ये स्पोर्स कहाँ पे होते हैं, दे बिकम डिस्पर्सिव एंड दे आर स्कैटर्ड बाय रेन, विंड और इंसेक्ट, एंड अंडर सुटेबल कंडीशन दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन. मैम कांट अंडर. स्पोर्स कैरिंग जो सेल्स रहते हैं ना, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजिया. ठीक है, जिसमें थिन वॉल्ड सिंगल सेल छोटे छोटे से स्पोर्स या स्ट्रक्चर रहते हैं, वो स्ट्रक्चर दे आर एक्चुअली टोटली पैक्ड इनटू द स्पोरेंजियम. धीरे धीरे वो स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है. बर्स्ट होने के बाद जितने भी स्पोर्स फॉर्म हुए थे, दे गेट डिस्पर्स्ड. ओके, डिस्पर्स मतलब मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द डिस्पर्शन ऑफ दैट स्पोर. इट मे बी रेन, विंड और इंसेक्ट. Okay, then they develop into the new plant. मतलब after getting detached from the sporangium, they develop into the new plant. ऐसे कुछ प्लांट है Yes, your voice is not audible. जो स्पोर्स जनरेट करते हैं फॉर दैट पिक्चर ऑफ द प्लांट. आपने देख यू आर नॉट ऑडिबल. साइड में व्हाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, याद है क्या आपको? Yes, repeat the Generally, point. that plant name I'm not getting exactly, but picture I remember. Anyway, spore formation, it occurs in that kind of plant which possess the spores. Okay, or the spores are actually restored into the sporangia. You can see the structure of sporangia like this. This sporangia burst out. Burst out मतलब suddenly break down होता है. When it break down, whatever the single cell thick walled structure present inside them, that structure is called as spores. These spores are transferred either by the rain, insect or wind. They get scattered and then finally they develop into the new plant under the suitable condition. The process is called spore formation. Miss, plants like gymnosperm. Gymnosperm, yeah. ठीक है. Yes, miss. Now let me know what is meant by asexual reproduction and what are the steps in what are the stages or steps of multicellular organism. Quick answer do फटाफट. There are 5 stages in multicellular organism, namely as fermentation, regeneration, budding. Not fermentation. Asexual reproduction in multicellular organism takes place by 5 different ways. The first one is Fragmentation. fragmentation. Example, Pyrogera. 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 Second example, Plantain. okay. Second method, Regeneration. what is the example? Planaria and Hydra. Planaria. Regeneration. The example is
lizard. Okay, then budding example Hydra. 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 Okay, birds are developed. They fully get, where they receive the nutrition from the parent cell. When they fully Then get develop mature from tentacles. the When they are parent fully cell, grown, and then after they they get detached. individual. Yeah, they get detached or they detach themselves from the parent and develop as a individual one. Then vegetative propagation can be of leaves in roots and stems. And birds. Certain birds are developed which grow into the leaves. Then similarly, in case of leaf also, for example, bryophyllum, it supports the development of shoots. That tiny shoots break down after fully grown up, and then in the ground under the presence of favorable condition, they started to form a roots and then become or lives as a independent life. Okay, then spore formation, and these are the advantages. See, the advantages of asexual reproduction is what? In this case, only single parent is required. There is no need to wait for another parent to have a continuation of life. This is one point. Second, this reproduction is very rapid process. And as a result of this reproduction, the large number of species can be generated within a short period. Okay, and whatever Yes, positive, ma'am. see, if we talk about meiosis or Miss, sexual the reproduction, meaning of mates is the another parent, no? sorry, Miss, here yes, you have mates, written. yeah, mates means here another parent. हाँ, ठीक है, तो अभी इसमें क्या पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है. जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. अगर सपोज उसमें से किसी एक पेरेंट की कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री मतलब उसको कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई डिसीज है, तो क्या होगा, द सेम डिसीज विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द ऑफस्प्रिंग. Offspring. या Yes, मतलब जो miss. किड्स है या जो न्यू जनरेशन है, वो डिसीज क्या होगा, क्योंकि जेनेटिक डिसीज क्या है कि अभी तक हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी से फुल्ली एडवांस टेक्नोलॉजीज आर नॉट डेवलप्ड टू क्योर द जेनेटिक डिफेक्ट. Okay, so in that case, what will happen if any one of the parent is affected by any kind of genetic disease? So the same disease will be carry over to the offspring. So as a result, this will cause a negative genetic influence, okay, to the successive generation. But the result of asexual reproduction is there. A single parent is there. So whatever genetic good character, bad character, whatever is there, it will be carry over as it is to the next generation. ठीक है, मतलब मिक्सिंग की जरूरत ही नहीं है. दैट इज द पॉइंट. गेटिंग द पॉइंट. Yes, ma'am. Yes, Yes, miss. miss. ये शॉर्ट में ऐसे एडवांटेज है. पहला एडवांटेज है कि सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, नॉट नीड ऑफ एनी अदर पेरेंट. सेकंड एडवांटेज है रिप्रोडक्शन प्रोसेस रैपिड भी है और